Hello students, good afternoon and welcome to the class. I am Shriti Sharma. These are my credentials. I've done my MBA in Finance, my MA in English. And my referral code is Sharmaji. Now, before we proceed, let me tell you about the scholarship test that we are having on the 26th of Jan, 6th of Feb and 13th of Feb. Very, very special. You should definitely write it because you stand a chance to win scholarships up to 100%, like complete scholarship. Everything free. All right, so definitely ये टेस्ट लिखिए मेरा कोड यूज कीजिए शर्मा जी. Okay, the timing of the test is 6 to 7 p.m. and it's going to be, of course, a 1 hour test with 30 questions. That means you can, on an average, put in 2 minutes per question. All right. अब देखिए क्या क्या है. Top 50 rankers will win up to 100% scholarship on Unacademy App plus subscription. यानी कि subscription भी मिल जाएगा और वो भी free में. इस टेस्ट के फीचर्स क्या है? यू गेट फ्री टेस्ट क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स, वीडियो सॉल्यूशन फॉर ईच क्वेश्चन. ओह वाओ, दैट्स रियली यूजफुल. डिटेल लाइव वीडियो एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड गेट इन डेप्थ इनसाइट्स एंड टेस्ट रिपोर्ट्स. टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एनालिसिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट्स समथिंग यू आर गोइंग टू गेट. So definitely write it, हाँ. Don't forget 26 जनवरी टाइम यूटिलाइज कीजिए रिपब्लिक डे का. ठीक है, सुबह अच्छे से नेशनल एंथम ये सब गाइए, टीवी देखिए और शाम को टेस्ट लिखने बैठ जाइए. ऑलराइट गाइस, तो ऑल्सो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग. ऑलराइट, कैट कॉम्बैट के बारे में तो आप जानते ही हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Reading comprehension being the most important part of CAT cannot be ignored, has to be stressed on the most. ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अभी एंड देन वी विल मूव ऑन टू वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैब नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कुछ. वोकैबुलरी वी आर गोइंग टू डू इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स राइट नाउ. बट लाइक आई सेड, आरसी से शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए हमेशा की तरह. The first question is primary purpose of the passage, which again means कि आपको central idea figure out करना है. You have to see what is the idea running through the passage. ठीक है, तो ये एक general question है. Okay, let me just check if I'm properly online or not. एक बार ये तो देख लें. Oh yeah, properly online, clearly so. Oh yeah, definitely yes. आगे का क्वेश्चन देखिए. Based on the information in the passage, it can be inferred that animals raised on CAFOs live indoors because. तो ये एक inference based question है. All right. Inference निकालना है इसमें. Okay, next one. The author describes CAFOs as having a negative impact on the environment for all of the following reasons except. So don't forget the exception. So, ये negative impact सभी reasons की वजह से exception आपको बताना है. Which of the following statements from para 5 represents an opinion and as opposed to a fact? ये थोड़ा आपका verbal reasoning type of question है. Which of the following pieces of information, if true, would strengthen the author's argument? आप देख रहे हैं किस तरह से critical reasoning is included in reading comprehension. Fifth one भी यही है, critical reasoning ही है. See, if true would strengthen the author's argument in para 6, तो हमको para 6 में उसका argument देखना होगा. उससे कोई inference नहीं निकालना है, उस argument को support करना है from one of the given options, right? Just assuming that the options are true. In the final para, the author states that meat from animals raised on factory farms is cheaper than organic or free-range meat. He admits this fact in order to, what's the purpose of admitting this fact? What is the reason behind it? Seventh is, synonym बताना है तो vocabulary based question हो गया. 8 questions. Which of the following statements contains a valid objection to the author's argument in the final para that he or she does not address? Okay. Valid objection है but उसने address नहीं किया.
क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आपको पैसेज भी लंबा सा है which you guys have to read. आपको अच्छे से ये पैसेज पढ़ना होगा to be able to solve the question. So go through it, take your time. Good afternoon, Tanmay. Hello, Gyanendra. Hi, Ankit. Hello, MS Dhoni. तो पहला पैराग्राफ आई गेस पहला स्लाइड आप लोगों ने देख लिया होगा. अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इफ वी कंपाइल मतलब गैदर करके कोलेट करना, साथ में रखना, गैदर करना, द अमाउंट ऑफ फूड, लैंड, वाटर एंड एनर्जी यूज टू रेज द 10 बिलियन एनिमल्स slaughtered each year for meat, we could use those resources to feed every single starving person on earth. तो जो भी ये 10 बिलियन एनिमल्स जो हर साल मारे जाते हैं उनका मीट खाने के लिए, अगर उनको जो फूड दिया जाता है, वाटर दिया जाता है, एनर्जी उन पे जो यूज़ होता है, लैंड जो यूज़ होता है, इसको अगर आप कंपाइल करें तो वो सारे रिसोर्सेज हर एक भूखे इंसान को दुनिया में फीड कर सकते हैं. मतलब कोई भी इंसान भूखा नहीं जाएगा. दैट्स व्हाट द फर्स्ट थ्री लाइन्स आर सेइंग. द मेजॉरिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड बाय, डिप्लीटेड मतलब क्या, कम हो जाना, रिड्यूस्ड. ये मेजॉरिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन. इसके लिए वो एक्रोनिम दिया है CAFO. CAFOs होते क्या है, लिखा है CAFOs are factory farms that mass produce livestock harming animals, the environment and humans in the process. ठीक है. CAFO क्या होता है, फैक्ट्री फार्म्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस करते हैं. और इससे किसको हार्म होता है, एनिमल्स को, एनवायरमेंट को और ह्यूमंस को. It is true that these farming methods provide abundant source of food and employ thousands of workers across the country. Abundant is like a lot. However, CAFOs should be placed under more stringent restrictions. कोई भी नया वर्ड अगर आपको लग रहा हो तो उसका मीनिंग लिखो. Stringent is strict, rigid. ऑथर कह रहा है कि CAFO जो होते क्या हैं ये बताया, फिर बोला हाउ डज इट एक्चुअली हार्म्स ह्यूमन, एनवायरमेंट एंड एनिमल्स. फिर कह रहा है कि ये भी सही है कि इट प्रोवाइड्स अबंडेंट सोर्स ऑफ फूड एंड इट गिव्स जॉब्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट CAFO should be put under strong, strict restrictions because of the unfair treatment of animals and the harm they do to both environment and humans. तो ओवरऑल सभी को हार्म हो रहा है एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ. आगे देखिए, रीड द सेकंड स्लाइड. आप बेसिक नॉवल में, आई विल गिव यू द नेम ऑफ द ऑथर, आप अगाथा क्रिस्टी की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं.
ओके बिकॉज अगाथा क्रिस्टी की किताबों का इंग्लिश बहुत हाई लेवल नहीं होता है, सिंपल होता है। uh, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स वहाँ पे आपको सीखने को भी मिल जाएंगे सिर्फ विद अ डिक्शनरी। और क्योंकि ओवरऑल कंटेंट सिंपल है तो यू कैन ऑल्सो डिराइव द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, बट जो भी नए वर्ड्स आपको मिलें आपको हाईलाइट करना चाहिए, उनका मीनिंग्स लिखना चाहिए। ओवरऑल स्टोरीज आपको समझ आ जाएंगी। शुरुआत के 2-3 पेज में पेशेंस रखना, अगर समझ ना आए तो आगे पढ़ोगे तो एवरीथिंग विद लिंक एंड इट्स इंटरेस्टिंग एज वेल। तो बेसिक नॉवल में आप अगाथा क्रिस्टी की किताब ट्राई कर सकते हैं, दैट्स वन ऑप्शन यू हैव। उसके अलावा इजी बुक्स में यू कैन ऑल्सो रीड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। तो रॉबिन शर्मा जो ऑथर है, यू कैन रीड एनी बुक्स ऑफ हिज एज वेल बिकॉज इवन देयर द लैंग्वेज इज ईजी। ठीक है, रॉबिन शर्मा इज द नेम ऑफ द ऑथर, यू कैन रीड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक बुक्स में आप ये भी पढ़ सकते हो, ट्यूजडेज विद मॉरी। ये भी एक अच्छी किताब है और इजी टू रीड है। ये नाम है, ओके दिस इज द नेम ऑफ द बुक, ट्यूजडेज विद मॉरी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर। ये किताब का नाम भी आप चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन ईजी रीड, इट्स अ गुड रीड, इट इज़ मोटिवेशनल। रॉबिन शर्मा भी की भी कोई भी किताब आप पढ़ोगे तो ईजी रीड होता है। अगाथा क्रिस्टी का डिटेक्टिव नॉवेल्स टाइप होता है, इवन दोज आर इजी रीड्स। तो इनिशियली आप ये तीनों में अगाथा क्रिस्टी ऑथर, रॉबिन शर्मा ऑथर का कोई भी बुक आप उठा के पढ़ सकते हो, या फिर एक किताब का नाम है ट्यूजडेज विद मॉरी, अनदर ऑथर आई डोंट रिमेंबर द नेम, आप वो भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन रीड करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इवेंचुअली आप जितने भी एग्जाम्स देने वाले हो, ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑनलाइन, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस इज मोर हेल्पफुल। ओके द सेकंड स्लाइड हियर। तो पहला स्लाइड हमने कुछ डिटेल में पढ़ लिया, आप दूसरा देखते हैं। वन ऑफ द की कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्सी इज समथिंग, द पॉइंट दैट इज बीइंग डिबेटेड। One of the key controversies surrounding factory farming is factory farms is animal rights. Factory farms raise livestock indoors, ठीक है, as opposed to allowing the animals to graze in fields and pastures. So one of the key controversies is कि factory farms में animal को उनका हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे animals are raised indoors और उनको बाहर ग्रेज करने का मौका नहीं मिलता है। ग्रेजिंग इज चरना। द फार्मर्स फेवर दिस ओवरक्राउडेड एनवायरनमेंट बिकॉज इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है उस फार्मर को, बट एनिमल्स का राइट यहाँ पे, एनिमल्स आर लाइक सफरिंग। प्रोवाइडिंग लेस स्पेस फॉर द एनिमल्स कॉस्ट लेस मनी। Filling pens. Pens are like the places where the animals are put in to their maximum capacity ensures that no space is wasted. Consequently, which means as a result of which, animal pens are often so small that larger animals cannot even lie down or turn around. In some cases, these small cages are beneficial for more than just maximizing capacity. Calves, for example, do not gain muscle mass in this environment. This keeps their meat more tender, which means more soft, which makes it more attractive to the consumers. तो कंट्रोवर्सी आप देख रहे हो कि फैक्ट्री फार्म्स में क्या होता है कि एनिमल का राइट्स, एनिमल्स को उनका हक नहीं मिलता, बहुत ही छोटे एरिया में उनको रखा जाता है, जिससे फार्मर को तो फ़ायदा होता है क्योंकि उसको स्पेस कॉस्ट उसका कम पड़ता है। मैक्सिमम कैपेसिटी में वो उन स्पेसेस को फिल कर देता है विद एनिमल्स, बट ये इसका रिजल्ट ये भी होता है कि एक तो एनिमल्स बाहर नहीं जा पाते, और जो एनिमल्स थोड़े बड़े होते हैं वो बैठ भी नहीं पाते या फिर वो टर्न भी नहीं कर पाते, दे डोंट हैव एनफ स्पेस। फार्मर्स को और बेनिफिट हो जाता है जो फैक्ट्री फार्मिंग करते हैं। ये बेनिफिट होता है कि जो बेचारे काव्स होते हैं, यंग वंस, यंग वंस ऑफ काउज एंड ऑल, वो मसल मास गेन नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनका मीट बहुत सॉफ्ट रहता है। तो ये जो मीट खाते हैं उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स इट सेल्स मोर एंड एट अ गुड प्राइस। थर्ड पैरा, livestock and CAFOs are often found living in their own urine and feces, stimulating the spread of diseases such as avian flu, foot and mouth disease, and mad cow disease, among other animals on the farm. So basically, they pee there, they live in their own urine. They जहाँ रहते हैं वहीं पे they complete their ablutions as well. They live in that dirty environment because of which disease is also spread. In order to combat is fight. In order to fight this or in order to counter this, farmers must give the animals antibiotics. In many cases, spread of disease, antibiotics are used for disease prevention instead of treatment.
In addition to being used to combat the spread of disease, antibiotics are also commonly used to encourage faster growth in livestock. This overuse increases the risk of livestock developing immunity to antibiotics, ironically making animals even more susceptible to disease. तो क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ कर देते हैं एंटीबायोटिक्स कि फिर उन पे एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता है और एंटीबायोटिक्स दिया जा रहा है उनको डिजीज से बचाने के लिए बट एक्चुअली दे बिकम इवन मोर प्रोन टू द डिजीज मोर ओपन टू द डिजीज मोर एक्सपोज टू द डिजीज सो दैट इज द आयरनी कि एंटीबायोटिक्स उनकी सेहत के लिए दिया जाता है कि वो ठीक रहें बट वो एक्चुअली और बीमार हो रहे हैं उस वजह से After being digested, these antibiotics are released back into the environment in the form of milk, meat, and waste, which can affect the people who eat these products or the environment that absorbs them. I think it's pretty clear, the entire part. Akash, English fast करने के लिए there is a book How to Read Faster and Better or How to Read Better and Faster by Norman Lewis. So you can read that. That will help you. Norman Lewis की किताब है. That's the name of the author. How to Read Faster and Better. या फिर How to Read Better and Faster. So that's a word you can go with. Now read this one. This next slide. CAFOs also negatively impact the environment in the form of air and water pollution. अभी बताया था कि animals किस तरह से negatively impact होते हैं और in turn humans negatively impact होते हैं because वो लिखा था ना antibiotics are also released in the milk in the environment. अब लिखा है they also negatively impact the environment in the form of air pollution and water pollution. Factory farms contribute to air pollution issues in the United States through release of toxic gases and vapors and by burning fossil fuels to run farm machinery. These farms also have notable consequences for environment in terms of water pollution. तो बताया कि किस तरह से air pollution होता है, किस तरह से water pollution होता है. One characteristic of CAFOs that creates water pollution is presence of lagoon. Lagoons का meaning यहाँ पे क्या है देख लीजिए. They are artificial storage basins where animal excrement is temporarily contained. Periodically, farmers flush this waste into ditches or nearby bodies of water. This waste combines with runoff from fertilized fields to pollute the water resource surrounding the CAFOs. It adds excess nutrients, pathogens, veterinary, pharmaceuticals, heavy metals, excreted hormones to the water sources. Such pollutants not only affect aquatic life, that is water life, that is fish, but can also lead to severe impacts on human health. तो वही बता रहा है कि eventually ये भी human beings किस तरह से affect करेगा. Aquatic life, that is water life, that is fish, but can also lead to severe impacts on I think बीच में वॉइस का ब्लिप हुआ था ना तो मीनवाइल आप लोग ये पढ़ लीजिए if you were not able to hear it. Okay, moving on to the next page. Moving on to the next page. The next slide. Basically, हर slide में एक negative impact पे elaborate किया गया है.
ग्रीन स्क्रीन वाला सेंटेंस देखें कहाँ तक दिख रहा है. विच दे हैव प्रीवियसली, बस इतना ही है. हैव के बाद लिखा है प्रीवियसली बीन exempted. प्रणंदू, अभी प्लस क्लासेस चल रहे हैं रात के 9 बजे. द प्लस क्लासेस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन एट 9 p.m. उसमें अभी हमने ग्रामर शुरू किया है. वी स्टार्टेड ग्रामर यस्टरडे. एंड ग्रामर की शुरुआत में केवल 500 स्पीड से शुरुआत करते हैं. तो यस्टरडे वी डिस्कस्ड नाउन्स. बस उतना ही डिस्कस किया है. तो वो आप अटेंड कीजिए 9 p.m. को, क्योंकि उसमें ग्रामर का अभी ग्रामर जस्ट शुरू ही हुआ है उसमें. Because yesterday we mainly did nouns and then doubt clearing, like discussions. All right, exempt का meaning. देखिए, one such regulation would force factory farms to adhere to air and water quality protection standards from which they have been previously exempted. If you have been exempted from it, yeah, for some time, that means uh, you don't have to follow it. You're free from it. So previously they were free from it, like they were at liberty not to follow it. जैसे कि किसी के लिए कहते हैं ना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट नहीं मिला, फ्री रहे. ऑलराइट, यस. एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस मतलब कि नॉट पेइंग द फीस, नॉट रिक्वायर्ड टू पे द फीस. ऑलराइट, दैट इज व्हाट इट इज. ओके, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव बीन थ्रू इट. आगे देखिए. लास्ट स्लाइड. Yes, Pranendu, you can enroll in the ongoing course because, like I said, grammar उसमें भी शुरू ही हुआ है, तो it's like the start of grammar. Done?
Okay, I hope all of you are done. All of you have read the entire passage. चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. The primary purpose of the passage. I think everybody should be able to answer this. इतना डिटेल में डिस्कस तो कर ही लिया. आगे के स्लाइड्स हमने डिस्कस नहीं किए बिकॉज रेपिटेशन हो रहा था. कुछ नया नहीं, मतलब same thing was elaborated on, no? देखिए पूरा पैसेज क्या था. Because central idea is like what's repeated throughout the passage or what's supported throughout the passage. तो ये CFOs के बारे में बता रहा है. हाउ इज इट बैड, क्योंकि अगर आप देखें तो पॉजिटिव्स हार्डली कहीं डिस्कस हुए हैं. कि किस तरह से CAFO हर चीज़ को पोल्यूट करता है. एनिमल्स के लिए भी खराब है, ह्यूमंस के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी. उसके बाद हर स्लाइड में एलाबोरेट किया गया है. पहले बताया गया कि एनिमल्स के लिए किस तरह से खराब है, उसको बहुत एलाबोरेट किया अच्छे से. उसके बाद बताया गया वो इन टर्न ह्यूमंस के लिए भी कैसे खराब हो जाता है. फिर डिटेल में बताया गया कि किस तरह से उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, तो रिवर्स भी पोल्यूट हो रहे हैं. तो किस तरह से वो इन्वायरमेंट के लिए खराब है. फिर बताया गया कि किस तरह से रिसोर्स डिप्लेशन भी होता है, कि यही रिसोर्सेज जो इस चीज़ में जा रहे हैं, इससे कितने सारे लोग खाना खा सकते हैं. तो पूरे पैसेज में इसके नेगेटिव्स बताए गए हैं और किस तरह से CAFO शुड बी कंट्रोल्ड थ्रू स्ट्रिक्टर लॉज एंड रूल्स. ठीक है, क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग अ लॉट ऑफ रूल्स एंड लॉज एंड एवरी एंटिटी इज एट अ डिसएडवांटेज. एंड में लिखा है थोड़ा बहुत, एडवोकेट्स ऑफ CFOs, कुछ लोग हैं सपोर्टर्स, वो कहते हैं कि CFO से सस्ता खाना मिल जाता है. बट देन उसको भी ऑथर ने काउंटर कर दिया है आगे जाके ये बोल के कि सस्ता खाना मिलता है तो क्या हुआ, आई मीन उतना मीट प्रोड्यूस ही मत करो. देयर कुड बी अ कंप्लीट कल्चरल चेंज जहाँ पे बेसिकली एनिमल्स को उतना फीड ही नहीं करे, उतने एनिमल्स रख ही नहीं रहे हैं और पीपल कैन हैव मोर ग्रेन्स एंड मोर वेजिटेरियन फूड. तो ओवरऑल कहीं पे भी ऑथर ने खुद से सपोर्ट नहीं किया है CFOs को. ऑलराइट, नेगेटिव ही बोला है CFOs के बारे में. और उसके बाद ऑफ कोर्स एक कोर्स ऑफ एक्शन ये बोला है कि देयर शुड बी स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दे फॉलो. तो चलिए देखते हैं. ए कह रहा है परसुएड रीडर्स दैट फैक्ट्री फार्म्स, वो CFO वही था, should be more strictly regulated to minimize harm they cause. A is making sense because throughout the passage, ये पढ़ के तो पूरा पैसेज पढ़ के तो आई एम कन्विंस्ड कि बड़े खराब होते हैं फैक्ट्री फार्म्स. बहुत दया आया एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के साथ वहाँ जो हो रहा है वो पढ़ के. आगे जाके ह्यूमंस के लिए भी खराब है, इवन वेजिटेरियन पीपल बिकॉज दे हैव द मिल्क एंड ऑल जिसमें एंटीबायोटिक्स मिक्स रहते हैं. इन्वायरमेंट के लिए तो खराब है ही. पढ़ के तो हम कन्विंस हो गए कि ये बहुत ही खराब चीज़ है. फिर ऑथर ने उसको बोला इट शुड बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड. तो ए सीम्स गुड, आई एम कीपिंग इट ऑन होल्ड because it seems good. B देखते हैं. Suggest economic alternatives to factory farms such as organic farming, soybean production. देखिए सोयाबीन प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एज ऑल्टरनेटिव सजेस्ट नहीं किया है ऑथर ने. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड एक जगह पे आया है और बस एक जगह पे, वहां पे भी ऑथर ने सजेस्ट नहीं किया है. एक्चुअली दूसरे लोग बोल रहे हैं जो CFOs को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फीजिबल नहीं है, उससे ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिलेगा और ज़्यादा महंगा पड़ेगा. तो author has not given these as alternatives to CFOs. No. See देखते हैं. Complain about water pollution caused by irresponsible practicing of keeping waste lagoon. This is only one part. हमको primary purpose main idea निकालना है. Main idea is like the idea running through the passage. Go for the option that covers uh, majority of the passage or entire passage. C covers a very narrow portion of the passage. C would be correct if it had been an inference based question, but it's a central idea based question. So the answer is not C. D. Educate readers about pros and cons. No, I think it's mostly about cons, the negative. The author is not educating us about the positives of CFOs, so even this is not the answer. Argue against the use of antibiotics for disease prevention. This is one point. Again, narrow, just one point. It cannot be the central idea, that idea that's repeated through the passage. इसलिए narrow कौन से थे? C and E, they are eliminated. E is covering majority of the passage. A is the correct answer. All right. तो पहले का आंसर है ए,
सी नहीं होगा। प्राइमरी पर्पस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन्फरेंस नहीं है ना, ये बस नहीं बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पैसेज को कवर कर रहा है। तो सी जो ऑप्शन है, इट्स जस्ट वन ट्रू आइडिया। इट इज देयर बट इट्स जस्ट वन आइडिया इन द पैसेज, तो उसको नैरो कहते हैं। Alright, like I mean, you should understand कि narrow options are to be eliminated when the question is about primary purpose, which is similar to main idea. Second, based on the passage, it can be. अब ये देखो, ये inference पे है। Question 1 अगर inference पे होता तो C correct होता, but वो inference नहीं था। Question 2 is about inference. It can be inferred that animals raised on CAFOs live indoors because A कह रहे हैं animals that live indoors require fewer antibiotics, उल्टा था passage में कि जो इंडोर्स रहते हैं वो बेचारे अपने ही गंदगी में रहते हैं, उनको वो बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उनको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा दिया जाता है तो वो इम्यून टू एंटीबायोटिक्स हो जाते हैं, तो ए तो हो ही नहीं सकता है, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता है। आगे लिखा है सम एनिमल्स रेज्ड इंडोर्स प्रोड्यूस मोर अपीलिंग मीट, दिस इज करेक्ट। अपीलिंग मीट डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। काफ्स के बारे में लिखा है कि क्योंकि वो इंडोर्स रहते हैं बेचारे काफ्स, तो देखो, काफ्स फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट गेन मसल मास क्योंकि वो केजेस में रहते हैं, और इसकी वजह से उनका मीट टेंडर होता है और इसलिए वो अपीलिंग हो जाता है या अट्रैक्टिव हो जाता है टू कंज्यूमर्स। तो टू इज करेक्ट, टू इज राइट। एनिमल्स रेज्ड इंडोर्स आर लेस एक्सपेंसिव, ये भी करेक्ट है, इसीलिए ये फार्मर्स जो हैं, फैक्ट्री फार्म्स वाले, वो ये इंडोर मेथड यूज करते हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। तो द आंसर इज 2 and 3, विच इज ऑप्शन डी, डेल्टा। यस तन्मय, 2 is डी, डेल्टा, करेक्ट। सस्ता पड़ता है भी पैसेज में दिया है। देखिए, यहाँ पे इंडोर्स की बात हुई है इस पैराग्राफ में। लिखा है द फार्मर्स फेवर दिस ओवरक्राउडेड एनवायरनमेंट बिकॉज इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। प्रोवाइडिंग लेस स्पेस फॉर द एनिमल कॉस्ट लेस मनी, तो उनको सस्ता पड़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, सो दैट्स द आंसर द सेकंड वन। थर्ड पे आते हैं। अब आप लोग बताइए क्या आंसर होगा थर्ड का। लेट मी नो इफ आई नीड टू गो बैक टू द पैसेज फॉर दिस वन। परफेक्ट आंसर हियर इज सी, एक्सेप्शन था क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट में लिखा है कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है दिया है, फर्टिलाइजर्स की वजह से एनवायरनमेंट कैसे गंदा हो रहा है, एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या नेगेटिव हो रहा है, और दैट इज गिवन। सी इज नॉट देयर। एनिमल्स दैट लिव इन ओवरक्राउडेड एनवायरनमेंट दे वेस्ट their energy, no, this is not given there. So yes, you guys are right, the answer is C. Fourth is more of a different kind of a question. Which of the following statements from para 5 represents an opinion as opposed to a fact? चलिए देख लीजिए। Factory farming uses more land than any other agriculture or industrial enterprise in the country. That's A.
It has been estimated that grain used to feed livestock alone could feed up to 800 million people in 1 year. Producing equivalent amount of protein from chicken, meat, and soybeans does not require equivalent amount of energy. Chicken meat production consumes 14 times more energy than soybean production. Grain and energy supplies should be used more efficiently to produce food resources than other livestock. फैक्ट वो होता है जिसको हम कंफर्म कर सकें, फैक्चुअली वेरीफाई कर सकें. दैट्स अ फैक्ट. एक टॉपिक होता है ना फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट, जो कि आजकल बहुत कम आता है एग्जाम्स में. बट फैक्ट इज समथिंग विच कैन बी वेरीफाइड, मे बी थ्रू नंबर्स, थ्रू वेरियस वेज. जो वेरीफाई हो सके इज अ फैक्ट, अदरवाइज इट वुड बी एन ओपिनियन. बताइए इनमें ओपिनियन कौन सा है? A point of view can be an opinion. All right, three of you have got an answer. Gyanendra, Ankit, and Pranay. Yes, E is the correct answer because it's an opinion. A जो है factory farming uses more land than any other agriculture or blah blah blah. ये more land use करता है या नहीं verify कर सकते हैं by calculations throughout the world. B में भी verify कर सकते हैं, पूरा numbers दिया है. C और D भी verify कर सकते हैं, but E जो है एक suggestion है, grain and energy supply should be used more efficiently. Use होना चाहिए to produce food resources. तो अगर एक suggestion है तो उसको आप क्या verify करेंगे? For example, अगर मैं आपसे ये भी कहूँ, you should practice one passage every day. It's not a fact, it's a suggestion. A suggestion is an opinion, is not a fact. Fact हो जाएगा when you tell me that, yes, I practice one passage every day. That can be a fact because it can be verified whether you really practice one passage every day or not. So you guys are right. The answer of the previous one is E. Now, in this one, which of the following pieces of information, if true, would strengthen author's argument in para 6? To strengthen author's argument in para 6, you need to know what is author's argument in para 6. तो चलिए देखते हैं कि argument है क्या para 6 में. 4, 5, 6. This looks like para 6. In order to combat, देख के तो यही लग रहा है. In order to combat the unfair treatment of animals and risk of environmental and human health, CAFO should be placed under stricter guidelines. One such regulation would force factory farms to adhere is to follow, to stick to air and water quality production standards from which they have previously been exempted, like those set forth by Clean Water Act. Enforcing these standards would lead to banning environmental hazards such as waste lagoons, which in turn would reduce environmental pollution and human health liabilities. तो ये हो गया आपका पैरा 6. अब देखना है कि which option can support it.
कि हाँ दे शुड बी प्लेस्ड अंडर स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स. हमको सपोर्ट करना है कि ये स्ट्रिक्टर कंट्रोल्स, ये वाला जो था पैसेज, उसको सपोर्ट करना है, तो इस पैराग्राफ को सपोर्ट करना है. हमको पॉजिटिव दिखाना है ना. देखिए क्या कह रहा है पैरा. In order to fight the unfair treatment of animals and risk to environmental and human health, they should be placed under strict guidelines. One such regulation would force factory farms to adhere to the quality standards. Enforcing would lead to banning environmental hazards such as waste lagoon, ये सब ban हो जाएगा, which in turn would reduce environmental pollution. So B option कह रहा है, beta, a town in North Carolina, example दिया है, that used to be situated next to a waste lagoon, reported 50% fewer cases of illness after the lagoon was shut down. तो ये पॉजिटिव हुआ ना कि ये कंट्रोल आया कि लगून बंद किया गया तो लोगों का बीमारी कम हुआ, तो ये सपोर्ट कर रहा है. सी जो है, फैक्ट्री फार्म्स दैट आर फोर्स्ड टू फॉलो द प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, दे रिपोर्ट लॉस इन प्रॉफिट, 30% लॉस. तो ये एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा है. ये कह रहा है कि देखो ये इन्फोर्स करने से तो कितना नुकसान होता है. तो इस तरह से आप कैसे अपना पॉइंट सपोर्ट करोगे ये दिखा के कि फार्मर्स को नुकसान हो रहा है. सपोर्ट करने का तरीका ये होगा ना कि ये रूल्स लेके आए तो कम बीमारियां हो रही हैं, रादर देन सेइंग कि ये रूल्स लेके आए तो फार्मर्स को नुकसान ज़्यादा हो रहा है. राइट, तो बी इज़ बेटर. ऑलराइट. ये तो अलग बात कह रहा है कि लोग जो मीट खाना कम कर दें तो उनको क्या फ़ायदा होता है, बट आर्ग्यूमेंट हमको ये नहीं सपोर्ट करना था कि मीट खाना नहीं है. आर्ग्यूमेंट ये सपोर्ट करना था कि ये जो भी फैक्ट्री फार्म्स हैं दे शुड बी प्लेस्ड अंडर स्ट्रिक्टर रूल्स. हाउ वुड दैट हेल्प, है ना. तो इसलिए ए नहीं होगा. डी और सी में बी बेहतर है. डी, सेवरल एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैव सपोर्टेड बिल्स टू फोर्स फैक्ट्री फार्म्स टू फॉलो. ठीक है, बट सपोर्ट तो करो, वो तो वहाँ भी दिया था कि रूल्स होने चाहिए. और यहाँ पे ये बहुत फैक्चुअल है कि ये वाटर एक्ट कब आया, बट वेदर इट वाज गुड इट वाज बैड कुछ भी नहीं लिखा है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. सिक्स देखिए, इन द फाइनल पैरा द ऑथर स्टेट्स दैट मीट फ्रॉम एनिमल्स रेज्ड ऑन फैक्ट्री फार्म इज चीपर देन ऑर्गेनिक और फ्री रेंज मीट. इससे ऑथर क्या एडमिट कर रहा है, लाइकली टू एडमिट व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस. हर्ष, यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड इन इन्फोसिस, दैट्स अ ग्रेट थिंग. और आप फोर्थ ईयर में हैं, सो आई गेस यू वुड बी ज्वाइनिंग एज वेल द कंपनी, राइट. तो आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए क्योंकि आपका थोड़ा हेक्टिक होने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो काम के साथ एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बट वो लास्ट मंथ्स में करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपको अपना काम भी देखना होता है, विच इन इटसेल्फ इज ऑलवेज हेक्टिक. तो अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मे बी यू कैन
डिसाइड कि हाँ ठीक है, आई जस्ट गिव हाफ एन आवर और 1 आवर टू इट, जो भी अभी फीजिबल हो, बट वो कंसिस्टेंट रहिए। मान लो 2023 में आपको देना है और आप अभी भी बिजी हो, बिकॉज यू हैव टू गेट अ गुड स्कोर इवन इन योर कॉलेज, और राइट, फोर्थ ईयर में हो, अच्छा स्कोर लेके आना है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स। तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, और अभी आपके पास अगर फ्री टाइम है तो डेफिनेटली गिवन मोर टाइम राइट नाउ, तब तो ज़्यादा टाइम दीजिए। और 6 महीने ओवर हो जाएंगे, देन यू कैन रिड्यूस इट टू हाफ एन आवर और 1 आवर, वॉट एवर, जितना भी दे पाओ, आधा घंटा भी दे पाओ तो वो भी ठीक है, क्योंकि अगले साल आपको एग्जाम देना है। पर अभी जो 6 महीना फ्री है उसको यूटिलाइज कर लो। आई तो सजेस्ट कि ये 6 महीना को मान के चलो कि मुझे एग्जाम, मान के चलो, मानने में कोई हर्ज नहीं है, कि मुझे 6 महीना में कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जाम देना है। तो वहां तक मतलब इस तरह से मान के भी चलेंगे, बीच में थोड़े बहुत लैक्स भी हुए तो भी आप 90 परसेंटाइल तक तो पहुंच जाएंगे, 95 तक। उसके आगे आप थोड़ा आराम से कीजिएगा, व्हेन यू आर वर्किंग एंड व्हेन यू आर मोर बिजी। बट अभी लाइक प्रॉपरली 6 महीना फ्री हो तो 1-2 घंटा मत पढ़ो, प्रॉपर रूटीन बनाओ, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो। फिनिश इट ऑफ इन दीज 6 मंथ, फिनिश ऑफ योर प्रिपरेशन। उसके आगे केवल प्रैक्टिस करते रहिएगा। VARC के लिए attend every class that will give you an idea of exactly what to prepare, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसीलिए आप सारा क्लासेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। जैसे अभी ये हम कर रहे हैं, उसमें हमको वर्बल रीजनिंग भी दिख रहा है, तो रीजनिंग अच्छे से करते रहना है, तो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, एट द सेम टाइम यू आर रीडिंग द हिंदू, राइट। तो दैट ऑल्सो विल हेल्प यू आउट, कि डेली का रीडिंग तो करो ही, बट डेली का यू हैव टू डू सम प्रैक्टिस एज वेल। Focus on reading comprehension, verbal reasoning, vocab and grammar. तो सिक्स्थ का आंसर शुड बी लाइकली admits this in order to, मतलब ये एडमिट करने का रीजन क्या हो सकता है। आप लोग वापस, you can also look at the last portion again. The author states that meat from animals raised on factory is cheaper than organic or free range meat, तो ऐसा admit क्यों करता है? Let's see, देख लीजिए। ऑल राइट, आई गेस आप सबने ये पार्ट देख लिया होगा। And I see you guys have answered as well. E, that's perfect. लास्ट का आंसर बताइए, synonym for advocates. Harsh, you can just keep going with what we are doing in real time as well. Previous video में you can also check out ये जो है hashtag early bird for cat 2022, उस पे आप क्लिक कीजिए, उसके थ्रू जो videos आते हैं, those are the ones you can watch. Seventh, synonym of for advocates.
As used in the last para, advocates are supporters. Perfect. The people who support are the advocates. Correct. Advocate का मतलब ये होता है to support. So yes, seventh is C. That's perfect. Wonderful. Advocate is to support. अच्छा हमारे पास एक और question है. Which of the following statement contains a valid objection to the author's argument in the final para that he or she does not address? Final para में क्या था कि people will move more towards eating grains, if you remember. Point है a valid objection to the author's argument in final para which the author does not really address. A valid objection to the author's argument. तो देख लीजिए फिर से कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि factory farms should be banned completely. Advocates कहते हैं कि it gives lower food prices. फिर कहते हैं कि organic food, free range food तो बहुत महंगा हो सकता है. Author कहता है this would be an inconvenience to consumers. देखिए, although this would be an inconvenience to consumers, a price increase would encourage people to eat a diet of less meat. All right. This cultural change would assist in solving broader resource crisis as fewer grain, energy, and land resources would be needed to support smaller scale production. Better treatment would protect humans from infectious diseases and effects of air and water pollution. तो इसके और क्वेश्चन ये है कि इसको अभी हम क्या बोल के कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं. एक वैलिड ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है टू दिस पॉइंट मेड बाय द ऑथर. ये पॉइंट आप देख लीजिए और फिर बताइए कि व्हाट कुड बी अ वैलिड ऑब्जेक्शन टू दीज पॉइंट्स. देख लिया होगा आप लोगों ने. आई एम श्योर. टेल मी द आंसर. वेरी गुड. वहां पे लिखा है कि प्राइस, ऑथर कहता है प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या it increase in price. I mean, some people might not get any food because of the increase in price. So B is a valid objection. देखिए हमको करना तो fill in the blanks भी था, but we have genuinely run out of time right now. तो ये fill in the blanks we are going to do it at 11 p.m. 11 p.m. भी आपका class है. So this will be done at 11 p.m. tonight on YouTube itself. Before we call it a day, not exactly call it a day because we are going to meet again. So before we end the class right now, let me tell you about the Plus and the Iconic subscriptions. In Plus, you get live classes, weekly tests, structured courses, unlimited access, and study material. In Iconic, you get everything that comes with Plus. Along with that, there's study planner, experts guidance, personal guidance, test analysis. The price points are mentioned here. You can use the code Sharmaji and get 10% off of Plus. Similarly, for Iconic, you can also use the code Sharmaji and get 10% off. You can also win the 100% scholarship on 26th. There's the test, so do write it. लिख लीजिए test. Scholarship मिल जाए तो take the subscriptions, no? Alright guys, I'm going to sign off for now. I will see you tonight. अच्छा, पहला तो एक 9 p.m. पे plus class है और